Hello my dear students, welcome to CMIS online classes. In today's class, we will discuss the questions and answers from chapter 3 of our English literature, Prithviraj Chauhan, the Valiant. In our previous video, we have already understood the chapter, what the chapter tells us about. The chapter mostly focuses on the event of Prithviraj Chauhan's marriage with Samyukt, daughter of Jayachandra, who was the king of Kannauj and was in not good terms with Prithviraj Chauhan. And also the other incidents that took place after the wedding of Prithviraj Chauhan with Samyukt. That how Muhammad Ghori took advantage of the enmity between Prithviraj Chauhan and Jayachandra and attacked Prithviraj Chauhan for several times, though he was being captivated by Prithviraj Chauhan, but at last he won the battle and he just captured Prithviraj Chauhan and imprisoned him till his death. And I hope you have understood the chapter, and today, based on what the chapter has informed us about Prithviraj Chauhan, we are going to discuss these questions and answers. So if you see exercise A of your book, it is written there, answer these questions, in which there are following questions of which we have to write the answers. So with each question I am also going to explain you how the answers I have written are the correct and appropriate answers for those questions. We already have understood the story of the chapter. So we will first see the question number 1, and the question number 1 reads like this. Exercise A, question number 1. What circumstance led to the rivalry between Prithviraj Chauhan and Jayachandra? See, Prithviraj Chauhan was the last Rajput king, and Jayachandra was the king of Kannauj, who was not in good term with Prithviraj Chauhan. And Prithviraj Chauhan got married with the daughter of Jayachandra, and before that also, before he got married, before Prithviraj got married with Samyukt, his lady love, who was the daughter of his enemy Jayachandra, who wanted to prove his supremacy with his power, that he wanted to show that he was powerful than anyone else, than any other Rajput kings. So the question here is asking us, what circumstance, what were the situation, what were the reasons that led to the rivalry between Prithviraj Chauhan and Jayachandra? ऐसी क्या वजह थी जो पृथ्वीराज चौहान और जयचंद्र को एक आपस में लड़ना पड़ा? They had to battle. Understood? So what were the reasons? See here, I have written the answer here. If you see this answer is quite long, but if you go through this answer, you are able to answer all the questions that follow after this question number 1. That means if you see question number 2, 3, 4, 5, all the questions, you will be able to answer all those questions if you go through this answer, first answer. So the answer is Jayachandra was a powerful ruler of Kannauj. So see here, at first we have to introduce Jayachandra, because still if we go through the question, we are unknown about Jayachandra. So to everyone
If we are writing the answer, we have to introduce Jayachandra here. Okay, so I have introduced him here, that Jayachandra was a powerful ruler of Kannauj. That means he was a powerful king of Kannauj. He was jealous of Prithviraj Chauhan as a fast rising power. He was jealous. वो जलते थे पृथ्वीराज चौहान से कि वो किस तरह से एक पावरफुल किंग बन रहे थे. They both had ill feeling for each other. They did not have good feelings for each other. Both of them were king and both of them had no good feeling for each other. Okay. Jayachandra wanted to prove himself supreme by force, and so he decided to do a Rajsuya Yagya, a performance of huge sacrifices by the kings, which was refused by Prithviraj Chauhan. Now see here, this is the main reason. What is the main reason? That जयचंद्र जो थे वो खुद को पावरफुल, ज़्यादा पावरफुल समझते थे और ये दिखाने की कोशिश करते थे उस समय के बाकी राजाओं को कि वो सबसे ताकतवर है. और इसीलिए उसने क्या किया, उसने एक राजसूय यज्ञ का अनाउंसमेंट किया कि वो एक राजसूय यज्ञ कर रहे हैं. सो ड्यूरिंग दैट टाइम this Rajsuya Yagya, if it is performed, the kings who participated in it had to sacrifice a lot. Numbers of sacrifices they had to give. Okay, like the numbers of animals, the numbers of other required elements. Okay, they had to sacrifice. And this request or this announcement was refused or denied. मना कर दिया किसने? पृथ्वीराज चौहान ने. That he was not going to be the part of that यज्ञ. Okay. So here from this refusal, जब उसने ये अस्वीकार कर दिया, जब पृथ्वीराज चौहान ने राजसूय यज्ञ के लिए अस्वीकार कर दिया, तो वही वजह बन गया. What was that was the reason behind the enmity of पृथ्वीराज चौहान एंड जयचंद्र. यहीं से पृथ्वीराज चौहान और जयचंद्र का दुश्मनी शुरू होते हैं. मोर ओवर मीन्स even after that what happened, more to that, उससे भी ज़्यादा क्या बात हुई? पृथ्वीराज चौहान was in love with संयुक्त, डॉटर ऑफ जयचंद्र. सो पृथ्वीराज चौहान फिर एक राजकुमारी से प्यार करती है जिसका नाम संयुक्त है, और वो किसकी बेटी है? जयचंद्र, जो उसके दुश्मन है. सो टू इंसल्ट पृथ्वीराज चौहान, सो इसीलिए पृथ्वीराज चौहान को इंसल्ट करने के लिए, उसे अपमान करने के लिए, बिकॉज जयचंद्र नेवर वांटेड her daughter to get married with पृथ्वीराज चौहान. ओके, जयचंद्र ये नहीं चाहते थे कि उसका बेटी का शादी किसके साथ हो? पृथ्वीराज चौहान के साथ हो. सो टू इंसल्ट पृथ्वीराज चौहान, जयचंद्र अरेंज्ड अ स्वयंवर. सो स्वयंवर वी नो इट was very famous during ancient time. Okay, स्वयंवर means an assembly or a program in which a bride chooses her bridegroom. Okay, एक ऐसा सभा जिसमें एक पत्नी अपने पति को चुनते हैं. Okay, so in this स्वयंवर, Jayachandra invited many of the kings and princes of other kingdoms, but he did not give invitation to Prithviraj Chauhan. Okay, and that was insult for Prithviraj Chauhan. And to add add injury to insult. Okay, very sorry, to add insult to the injury, what he did, he ordered his ministers to make a statue of Prithviraj Chauhan and ordered them
to place the statue of Prithviraj Chauhan at the gate of the assembly. Okay, he wanted to see him as a doorman at that program. Okay, so it was a big insult for Prithviraj Chauhan, but Samyukt only wanted to get married with Prithviraj because both of them were in love. Okay, so Prithviraj was informed about it. He was informed by Samyukt that whatever was planned by his father was going to happen. Okay, he reached the assembly in disguise of a doorman. So वो उस स्वयंवर में चले जाते हैं खुद को एक डोरमैन का वेश बदल कर. ओके, एंड विस्क्ड संयुक्त अवे विद हिम. सो वो अपने साथ संयुक्त भगा ले जाती है एंड चैलेंज जयचंद्र ओपनली टू स्टॉप हिम फ्रॉम टेकिंग हिज वाइफ. सो वो वहाँ खुलेआम जयचंद्र को ये चैलेंज करते हैं कि अगर वो रोक सकते हैं तो उसे अपने पत्नी को ले जाने के लिए रोके. ओके, so this was enough to let rivalry between these two. So the first incident I told you, and this second incident, the incident of Swayamvar, these two incidents were enough to let rivalry between these two. These two means Prithviraj Chauhan and जयचंद्र. तो ये दो जो घटनाएं थे वो काफ़ी थे ये दोनों के बीच बैटल होने में, लड़ाई होने में, भिड़ंत होने में. ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अदर क्वेश्चंस. But you all need to go through the full answer of the question number 1 so that it will become easier for you all to go through the answers of other questions. Okay, so see here, why did Jayachandra decide to undertake a राजसूय यज्ञ? So जयचंद्र ने राजसूय यज्ञ को करने के लिए अनाउंसमेंट क्यों किया? क्यों उसने ये कहा कि वो राजसूय यज्ञ करना चाहते थे? ओके, सो आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट आंसर ऑल्सो. सो द आंसर इज जयचंद्र डिसाइडेड टू अंडरटेक अ राजसूय यज्ञ टू फोर्सफुली प्रूव हिज सुप्रीमेसी ओवर द अदर राजपूत किंग्स. सी, जयचंद्र खुद को महान बताने के लिए कि वो कितना पावरफुल थे, वो फोर्सफुली करने के लिए, फोर्सफुली ये बताने के लिए कि वो सबसे शक्तिशाली है, इसलिए उसने राजसूय यज्ञ अरेंज किया था. अंडरस्टूड? नाउ द थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड पृथ्वीराज रिएक्ट टू दिस डिसीजन? सो व्हेन जयचंद्र डिसाइडेड to arrange a Rajsui Yagya, what was the reaction of Prithviraj Chauhan? See, I have already informed you that he refused, he denied, उसने इनकार कर दिया to become the part of this यज्ञ. उसने इस यज्ञ का हिस्सा बनने से मना कर दिया था. So the answer is Prithviraj refused to be the part of Rajsui Yagya which would lead to his huge sacrifice. क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो इस यज्ञ का हिस्सा बना तो उसका बहुत चीज़ों का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा उन्हें, विच ही नेवर वॉन्टेड टू डू, जो वो कभी करना नहीं चाहते थे. दिस मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ एनमिटी बिटवीन पृथ्वीराज एंड जयचंद्र. सो यही एक इंसिडेंट है जहाँ से पृथ्वीराज चौहान और जयचंद्र का दुश्मनी शुरू हो जाते हैं. सो दिस आंसर इज ऑलरेडी देयर in the answer of question number 1 also. Now question number 4. Now just read question number 4. The question number 4 is, why did Jayachandra decide to arrange a Swayamvar for Samyukt? Why was Prithviraj not on his list of invitees? So जयचंद्र ने स्वयंवर का आयोजन क्यों किया अपने बेटी संयुक्त के लिए, और जितने भी इन्वाइटीज़ थे उसने जितने भी राजाओं को निमंत्रण दिए थे उसमें पृथ्वीराज चौहान का नाम क्यों नहीं था? सो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस इन द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 ऑल्सो, बट अगेन वी विल सी द आंसर. सी हियर,
Jayachandra decided to arrange Swayamvar for Samyukt to insult Prithviraj Chauhan. So it was a program to insult Prithviraj Chauhan. ये प्रोग्राम सिर्फ पृथ्वीराज को इंसल्ट करने के लिए था. He did not want Prithviraj to marry her daughter as he always took him as his enemy. So वो ये नहीं चाहते थे कि पृथ्वीराज कभी भी उसके बेटी से शादी करे, क्योंकि वो पृथ्वीराज को हमेशा से अपना दुश्मन समझते थे. सो पृथ्वीराज वॉज नॉट इन हिज लिस्ट ऑफ इन्वाइटीज़. इसीलिए पृथ्वीराज चौहान उसके इन्वाइटीज़ के लिस्ट में नहीं थे. उसका नाम, पृथ्वीराज का नाम जयचंद्र के इन्वाइटीज़ के लिस्ट में नहीं थे. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5. हाउ डिड जयचंद्र एड इंसल्ट टू इंजरी एज फार एज पृथ्वीराज वॉज कंसर्न. सो जब यहाँ पृथ्वीराज चौहान की बात आती है तो पृथ्वीराज चौहान को इंसल्ट के ऊपर और इंसल्ट, एड इंसल्ट टू इंजरी, दिस इज an idiom, okay, this is a phrase. So insult to injury means we particularly understand it as आग में घी डालना. okay, so किसी, अगर हम आग में घी डालते हैं तो क्या होते हैं, आग और ज़्यादा जलते हैं. so पृथ्वीराज चौहान का इंसल्ट तो किया उसे स्वयंवर में निमंत्रण ना करके, तो इसके ऊपर भी उसने ऐसा, जयचंद्र ने ऐसा क्या काम किया जिससे उसका और ज़्यादा अपमान हो. सो द आंसर इज टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी. ओके, इंसल्ट टू इंजरी ऑफ होम, पृथ्वीराज चौहान. पृथ्वीराज चौहान को और अपमान करने के लिए व्हाट डिड जयचंद्र डू? जयचंद्र ऑर्डर्ड टू मेक द स्टैचू ऑफ पृथ्वीराज. ओके, जयचंद्र ने अपने मिनिस्टर्स को पृथ्वीराज चौहान का स्टैचू बनाने के लिए कहा. एंड इंस्टॉल्ड एट द गेट इन प्लेस ऑफ अ डोरमैन. तो उसे पृथ्वीराज चौहान का जो स्टैचू बनाया था उसे डोर में लगाने के लिए कहा. और डोर में कौन रहते हैं? एक डोरमैन रहते हैं, है ना, एक गार्ड रहते हैं. सो ही वॉन्टेड टू सी द किंग, he wanted to see Prithviraj Chauhan, who was a very powerful king, as a doorman. So to see the king as a doorman is a very big insult. Okay, so this was an act of insult to injury. Okay, so now we will see question number 6. How did Ghori repay Prithviraj's chivalrous gesture of letting him walk away free? So we already know from the story that when Muhammad Ghori was imprisoned by Prithviraj Chauhan, and when Muhammad Ghori pleaded Prithviraj Chauhan to leave him, जब मोहम्मद घोरी को पृथ्वीराज चौहान ने हराकर उसे पकड़ा था और जब मोहम्मद घोरी ने उसे माफ़ी मांगा था और कहा था कि उसे छोड़ दे, तो उस समय पृथ्वीराज चौहान ने, ही वॉज अ वेरी गुड पर्सन ऑल्सो, गुड ह्यूमन ऑल्सो, तो उसने मोहम्मद घोरी को छोड़ दिया था. ओके, बट द वेरी नेक्स्ट ईयर व्हेन मोहम्मद घोरी री-अटैक्ड पृथ्वीराज चौहान, दैट टाइम मोहम्मद घोरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान. तो उस समय मोहम्मद घोरी पृथ्वीराज चौहान को हराते हैं. लेकिन जिस तरीके से पृथ्वीराज चौहान ने उसके साथ बर्ताव किया था, उसे छोड़ के, जबकि हिज मिनिस्टर्स हैड ऑलरेडी सजेस्टेड हिम नॉट टू लीव मोहम्मद घोरी. ओके, जबकि उसके मिनिस्टर्स ने उसे ऑलरेडी बताया था कि मोहम्मद घोरी को छोड़ना नहीं है, फिर भी पृथ्वीराज चौहान ने उसे छोड़ दिए थे. सो ही हैड टू पे फॉर इट. ओके, एंड द आंसर इज मोहम्मद घोरी वॉज रिलीज्ड फ्री व्हेन ही वॉज डिफीटेड एंड इम्प्रिजन्ड बाय पृथ्वीराज चौहान. सो मोहम्मद घोरी को छोड़ दिया गया था जब उसने माफ़ी मांगा था पृथ्वीराज चौहान को, जब पृथ्वीराज चौहान ने उसे पकड़ा था. बट द वेरी नेक्स्ट ईयर here you should add,
the word here. Prithviraj was re-attacked by घोरी. तब उस समय पृथ्वीराज चौहान को फिर से मोहम्मद घोरी ने अटैक किया था. Defeated him, उसे हराया था. And took him as a captive in chain to घोर in अफगानिस्तान. और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान को एक बंदी बनाकर, एक बंदी की तरह, he was not treated very well in the jail of Ghor in Afghanistan. He was taken as a captive. As a captive. Captive means is a person who is captured. Okay, उसे कैप्चर किया गया, उसके ऊपर चेन्स लगाए गए और उसे अफगानिस्तान ले गए. और he was very much taunted by Muhammad Ghori and his men. So I hope these explanations of all answers from exercise A have been very helpful for you all to re-understand the chapter. So there is also another chapter, another exercise from the chapter in which also there are some questions and questions which we have to answer. So we will discuss that exercise in the class itself. Okay, so this much for today's class. Thank you so much.